Hello, everyone, and very good afternoon once again, guys. How are you now? So, welcome everybody, and very good afternoon. And let's see who are alive with us now. Balkishan Tiwari is there, Avni Singhal, Sunil Kumar, Nityasri, Vinod, then Preeti Singh, Hitesh, Kinjal. Great. So, very good afternoon, everybody. So आज का हमारा जो टॉपिक है that is geometric progression. In the previous session we had completed arithmetic progression and in today's class we are going to complete with geometric progression. तो जीपी आज हमें फिनिश करना है और जीपी के लिए जीपी के लिए अब आपको क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन के साथ में। कुछ लोगों ने और ज्वाइन कर लिया है। रेणुका इज देयर, नैन्सी, हरिहरन, प्रियंका, करण, अनुज, प्रियांश गुप्ता, कुमकुम, दिया राजपूत, कम्बेश्वरी, मधु, पल्लवी, शिव गुप्ता, दिया, सौम्या, धीरज, मान्या. Great. So welcome everybody. So Sri Dharmappa is saying, I am waiting for your lecture and I am from Karnataka. That's great. Okay, perfect. So बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पैटर्न कैसा होता है? जब भी सीरीज में एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह का अगर आप पैटर्न देखते हैं, देन इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, द नंबर इज लेट्स से 4. 4 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 8, 16, 32, 64 and so on. So in this pattern, what you can observe is this, that the second number is double of first. Then again, next number is double of the previous one. So 8 is double of 4, 16 is double of 8, 32 is double of 16, 64 is double of 32, and so on. That means if we multiply by 2, then we get this series. So we can find out a ratio which is known as the common ratio. Ratio को आप कैसे calculate करते हैं? Like second term upon first term, or you can do with third term upon second term, fourth term upon third term. So any term divided by the previous term. You can pick any term and divide with the previous one. So if all these are equal, that means there is a common ratio. अगर ये सारी values same आती है, that means ratio is common. So let us check. 8 upon 4. On the other hand, we are having 16 upon 8, then 32 upon 16. So all of them are giving 2. All of them are giving 2. So there is a common ratio. And whenever the ratio is common, then it is regarded as GP. तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीपी. तो सिर्फ इतना सा मेन कॉन्सेप्ट है जीपी के लिए कि सीरीज जीपी है या नहीं, तो कैसे पता लगेगा? तो सिर्फ आपको ratios निकाल के चेक करना है. If the ratios are common, then it is a GP. If ratios are not common, then it is not a GP. Okay, so this is the very simple concept. Now let's take some more examples. If we are having, let's say, 5, 15, 45, 135. Now you have to check whether it is a GP or not. So second term upon first term. So 15 upon 5 gives 3. Then 45 upon 15 again gives 3. Then 135 upon 45, again it is 3. So all the ratios are same. All the ratios are common. So it is GP. It is simply a GP. Then let's take one more example. 1, 1 by 2, 1 by 4, and 1 by 9. This is the series. Now, whether this is a geometric progression or not.
Now you can check second term upon first term, third term upon second term, and so on. Now, this time you can see that first of all we are getting half, then second also we are getting half, but in the third case we are getting 4 upon 9. So it is not equal. So since the ratio is not common, the ratio is not common. Ratio is not common, so it is not a GP. तो फिर ये आपका GP नहीं है. Okay? So when there is a common difference, अगर common difference है, it is regarded as AP, and अगर common ratio है, then it is regarded as GP. Okay? तो in case of AP, आपको क्या करना पड़ता है? Subtract. What you have to do? Subtract. Like second term minus first term, third term minus second term. So that is an AP. Whereas in a GP, you have to divide and find out the ratio. All right? Okay. Then let's take the third example also. Third one is 2, -6, 18, and so on. So let's write here 2, -6, +18, -54, and so on. So now, in this case, again, let's check. -6 by 2 gives -3. 18 by -6 gives -3. -54 upon 18 gives -3. So all are same. All are same. So here again, the ratio is common. The ratio is common, so it is a GP. All right. So in this way, you can simply find whether it is a GP or not. Okay. Okay, perfect. So I think everybody has understood till here. Now, so commonly we can write the series of GP as the first term is written as A. First term is written as A. When we multiply with the common ratio, the second terms become AR. तो जब आपने फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म इज AR. AR को फिर से आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम AR स्क्वायर, then AR cube, and so on. And so on. Okay. So here there is a simple formula to find the nth term of the GP. What is that formula? Nth term is equal to A multiplied by R to the power of n minus 1. A multiplied by R to the power of n minus 1. So this is the basic formula. This is the common formula. So in this way, you can simply calculate the term. Now, let's say example number 2. The series given is 1, 2, 4, 8, and so on. Now, which term is 256? You have to calculate which term is 256. That means you are supposed to calculate n. N आपको calculate करना है and term is given to you. So let's solve. So in place of Tn, we have to write 256. Then what is the first term? 1 is the first term. Then common ratio. So common ratio क्या है? You can divide and find it out. The common ratio is simply 2 because 2 by 1 is 2. 4 by 2 is also 2. So common ratio is 2 and whole to the power of n minus 1. Okay. Now we have applied the formula. Now just simplify and get the value of n. So how to simplify? 256 is simply 2 to the power of 8. And on right hand side, we are having 2 to the power of n minus 1. So when base is same, powers are equal. जब base same होता है, तो power equal हो जाती है. So 8 is equal to n minus 1. 8
is equal to n minus 1. Therefore, value of n will be 9. What is the value of n? N is equal to 9. Okay. In this way, you can calculate. So let's apply this formula in some more places. Let's say this time the number is 1, 3, 9, 27, and so on. And now you have to find out the term number 6. You have to calculate term number 6. So how can we calculate? So for applying the formula, we require two things. One is A. A means the first term, it will be 1. R, common ratio is 3. Now just apply the formula. So T6 is equal to A multiplied by R to the power of 6 minus 1. So what we are getting? 3 to the power of 5. 3 to the power of 5. Now calculate and let me know the answer. So it will become 243. This is your term number 6. This is your term number 6. All right. Understood, everyone? So this is the simplest way in which you can solve. So this is example number 2. Example number 2 was done. And then we have taken one additional example from my side. And that is also clear. Now how to calculate the geometric mean? Like if we have to insert few geometric means between the numbers, then how it can be done? तो हम geometric mean को कैसे calculate कर सकते हैं? So let's take the basic concept first and उसके बाद हम इसके ऊपर आ जाएंगे. तो अभी हमने एक डिस्कस किया है. Let A, B and C, the three terms which are in GP. A, B and C are three terms in GP. Then in order to find out the ratio, what we have to do? Second term upon first term. It will be equal to third term upon second term, right? Second upon first will be equal to third upon second. Now on cross multiplication, what we are getting? B square is equal to AC. तो जैसे ही हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा. क्या फॉर्मूला है ये? B square is equal to AC. And the same concept we have already covered in ratio and proportion. तो अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं किया है तो उसको जरूर रिकॉल कर लें, बिकॉज वीडियो सारे अवेलेबल है. ICAI के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है. तो आप सब जगह से रेशियो का वीडियो देख सकते हैं. तो B square is equal to AC. ये हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है. Now what we are supposed to do in example number 1. So let's read example number 1. Example number 1 says insert three geometric means between 1 by 9 and 9. So 1 by 9 is the number. उसके बाद आपको 3 places fill करना है and then the number is 9. Okay, so this is supposed to be filled. Now what is the first term? First term is 1 upon 9. Now you don't know what is R. R की वैल्यू आपको नहीं पता है, बट क्या आपको पता है what is the value of n? Yes, n is available. n कैसे available है? 1 by 9 is the first term, then second, third, fourth, and 9 will become the fifth term. So therefore value of n is equal to 5. A is available, n is available. Then what is 9? 9 is known as T5, term number 5. Now we can apply the formula for Tn. Tn is equal to A into R to the power of n minus 1. So term number 5 is available. So we can write 9 is equal to 1 by 9
into r to the power of 5 minus 1. So on cross multiplication, 81 is equal to 81 is equal to r to the power of 4. Now what can be done? 3 to the power of 4 is equal to r to the power of 4. So therefore, r is equal to 3. Because when powers are same, base will be equal. When powers are equal, base will also be equal. So therefore, value of r is 3. So what is r? R is the common ratio. Now, what is the final solution? You require second term. Second term आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? For second term, so first term multiply by common ratio. You will get 1 by 3. Then what about the third term? So second term multiply by common ratio, it will be 1. And for the fourth term, third term multiply by common ratio. So these are the required terms. So ये तीनों terms आपको चाहिए थी. So these are the three geometric means between the two numbers. Okay. All right. So Vivkesh Kushwaha is asking आपका चैनल किस सोशल मीडिया पर है? It is on simply YouTube. You can search CA Gaurav Chopra. Okay. On YouTube, you can simply search CA Gaurav Chopra and I will be there. All right. So any doubt in this example? Example number 1. इसमें कोई doubt है किसी को? No? Okay, perfect. Now let us understand the second example also. Find the GP. So what if you have to calculate GP, where fourth term is 8 and eighth term is 128 by 625. All right. तो चलिए फोर्थ टर्म आपको दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे? T4. T4 means A into R to the power of 4 minus 1. That means AR cube. So AR cube is equal to 8. Then T8 is also given. So A into R to the power of 7. And it is equal to 128 upon 625. So these are the two equations, equation number 1 and equation number 2. Equation 1 and equation 2. Now, we have to simplify and find the value of R. So in order to solve these two equations, what we have to do? Simply divide them. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर लें. कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी. A and A will get cancelled. R cube will get cancelled. So what is left? R to the power of 4. So 1 upon R to the power of 4 is equal to 8 multiplied by 625 upon 128. Okay. Now we can cancel it further, or further cancel करने के बाद what we are getting? 16. So R to the power of 4 is equal to 16 upon 625. Now 16 is 2 to the power of 4 and 625 is 5 to the power of 4. So therefore we can write it as 2 by 5 whole to the power of 4. So powers are equal. तो जब powers equal है तो base भी क्या होगा? Equal होगा. So therefore R का value कितना आ जाएगा? 2 upon 5. The value of R will be 2 upon 5. Okay. So in this way you can simplify. Now R का value तो आ चुका है. Now what is your requirement? आपका requirement क्या था कि find out the GP. GP आपको निकालना है. तो GP निकालना है, that means you have to also find the first term. So let's substitute the value of R
in equation number 1. So A multiplied by 2 by 5 power 3 is equal to 8. So let's solve. A will be equal to 8 into 5 cube upon 2 cube. So this can be cancelled. So the value of A is 125. So first term is 125. Now, if you want to calculate second term, the first term multiply by the common ratio. So what you are getting? 50. Then third term, it is 50 multiply by 2 by 5. It will become 20. And fourth term will be 20 into 2 by 5. That is 8. So in this way, you can simply calculate. All right. So this was second illustration. Now it's time to learn the next formula. So next formula will be for summation. So in order to calculate the sum of GP, sum of terms in GP, sum of terms in GP. So what is the formula? So if the value of R is greater than 1, अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है? मोर देन 1, 1 से ग्रेटर है, 1 से ज्यादा है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? Sn इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय R to the power of n minus 1 upon R minus 1. This formula is applicable when R is greater than 1. तो R अगर 1 से greater है तो A multiply by R to the power of n minus 1 divided by R minus 1. The same formula is written here. Okay. Now, if the value of R is less than 1, then there will be slight variation in the formula. Then what you have to do? A multiply by 1 minus R to the power of n upon 1 minus R. So this is the small change in the formula. तो आपको बस ये देखना है इन क्वेश्चन R का वैल्यू 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है. Accordingly, you can apply the formula. All right. So these two formulas we have done. So these are applicable when you have to calculate the sum. Now, sum of the series when there are certain numbers, when there are finite numbers. But if the series is infinite, then again the formula will be different. So this formula is for a finite series. जहां पर हमें पता है सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो फाइनाइट सीरीज के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज the formula will be different. It will be A upon 1 minus R. A is the first term divided by 1 minus R. So this is the formula for infinite series. All right. Infinite series. Now, let's apply these formula. Example number 1. Find out the sum of the series up to 8 terms. 8 terms तक आपको क्या करना है? सीरीज का सम कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 1, second term is 2, then 4, and then 8. So these are the 4 terms. Now, you have to find out the sum up to 8 terms. So series is finite. Then the first step is find out the required values A and R. The first term is 1 and common ratio
is 2. Common ratio is 2. Now, since the common ratio is greater than 1, so which formula is applicable? A multiplied by r to the power of n minus 1 upon r minus 1. This formula is applicable. So we have to find out S8. So 1 into 2 to the power of 8 minus 1 upon 2 minus 1. So let's simplify. 2 to the power of 8 is 256 minus 1. You are getting 255. So this is the sum. All right. So Anuj has given the correct answer. 255 is your final result. All right. Then second one. Let's move on example number second. Find the sum of n terms. Now this time again you have to calculate the sum, but the sum is of n terms. So let's write the question here. 6, 27, 128 and 629 and so on. Now this time, can you see this is a GP or not? आपको पता लग रहा है क्या ये सीरीज GP है या नहीं है? तो अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करें तो इट इज नॉट अ GP. क्लियरली आपको GP नहीं लगेगा, लेकिन इसमें कुछ हिडन है. देयर इज समथिंग हिडन इन दिस काइंड ऑफ सीरीज. दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सर सीरीज. इसको हम डिटेल में लॉजिकल रीजनिंग में कवर करते हैं कि किसी भी सीरीज को हम पैटर्न में डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या लॉजिक है, कि ये आपस में नंबर्स किस तरह से कनेक्टेड है. तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, ये सब 5 के मल्टीपल के पास में है. लेट्स से 5 to the power of 1 plus 1, it is 6. Then 5 to the power of 2 plus 2, it becomes 27. Then 5 to the power of 3 plus 3, it is 128. Then 5 to the power of 4 plus 4, it is 629 and so on. So this is the series. Now, if you split this into two parts, it will become 5 to the power of 1 plus 5 square plus 5 cube, 5 to the power of 4, and so on up to n terms. Up to n terms. Then also you are having 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms. Now we have divided the series into two parts. Now clearly you can see that the first part of the series is a geometric progression. सीरीज का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिख रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 5. दोनों की ही वैल्यू क्या है? 5. a इज 5 एंड r इज आल्सो 5. दोनों 5 आ चुके हैं. नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Sn. तो Sn का फॉर्मूला क्या है? a मल्टीप्लाई बाय r टू द पावर ऑफ n minus 1. Is this the formula? No, this is the formula for terms. अब क्या करेंगे? डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको साथ में. तो a इंटू r टू द पावर ऑफ n, तो 5 टू द पावर ऑफ n minus 1 divided by r minus 1. Divided by r minus 1. Now, in second case, it is 1, 2, 3 and so on. Sum of first n natural numbers. यहां पर क्या बन रहा है आपका? n natural numbers. तो n natural numbers का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 upon 2. So this will be your final result. So you can write this down. 5 by 4 into 5 to the power of n minus 1 plus n into n plus 1 by 2.
So this will be your final answer. All right. So this was example number second. Understood, everybody? Now we can move towards example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 भी थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, तो उसको समझ लेते हैं। 3 में क्या गिवन है आपको? द फर्स्ट टर्म इज 3, then 33 plus 333 and so on up to n terms. अप टू n टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये सीरीज एपी है, जीपी है, या फिर उन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो इस सीरीज में क्या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? इज देयर एनीथिंग कॉमन हियर? यस, 3 इज कॉमन, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। अब इस सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है, या आप क्या पैटर्न बना सकते हैं? तो जब भी ऐसा पैटर्न आता है, जब ये सीरीज आती है, देर आर फिक्स सेट ऑफ रूल्स। देर आर फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स। अब जैसे ही आपके पास 1, 11, 111 ये सब आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप आपका फिक्स है। और वो फिक्स स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। तो उससे क्या होगा? 3/9, दिस इज द डिवीजन। मल्टीप्लाई, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 9, 99, 999 एंड सो ऑन। कहां तक है ये आपके पास? n टर्म्स। ये आपका मेन स्टेप है। 9 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है एंड 9 से डिवाइड भी करना है। परफेक्ट। नाउ सब कुछ 9 के पैटर्न में आ चुका है। अब हम इसको जीपी और ईपी में कैसे स्प्लिट करते हैं उसको समझेंगे। सो 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1, राइट। 99 को हम क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या लिखेंगे? 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या बन जाएगा आपका? 10 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। 10 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज टू स्प्लिट द सीरीज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीरीज को क्या करते हैं? स्प्लिट करेंगे। तो लेट्स स्प्लिट देम। तो 3/9, then it will become 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3 and so on. And ये कहां तक जाएगा? 10 to the power of 36. Then we are having negative series, 36. -1, -1, -1 up to n terms. up to n term. चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका पार्ट है, द फर्स्ट पोर्शन इज बेसिकली योर जीपी, बिकॉज 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 टू द पावर ऑफ 4, सब कुछ 10 के मल्टीपल में जा रहा है, 10 की पावर में जा रहा है। सो फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10। ओके, तो चलिए जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए अपॉन, अच्छा, ए मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे? r टू द पावर ऑफ n
-1 upon r minus 1. This is the formula. Then -1 -1 -1 n times अगर लिखा जाए तो it will become -n. So this is basically the final answer, 3 upon 9. Then you can write 10 into 10 to the power of n minus 1 upon 9 and then minus n. So this you can write as your final answer. And अगर आप इसको आगे और लिखना चाहें, you can take the LCM and further simplify also. तो चलिए further simplify कर लेते हैं. 3 upon 81 then 10 to the power of, यहाँ पे 10 का पावर 1 है and 10 का पावर n है. There are two powers, 10 का power 1 and 10 का power n. So it will become 10 to the power of n plus 1. Okay. Then you can write -1 minus 9n. Okay. ये आप लिख सकते हैं. All right. चलिए ये हो चुका है आपका. So therefore the final answer is in this pattern. तो आप इसको फाइनली कैंसिल करके इस पैटर्न में आंसर लिख सकते हैं. All right. Okay. Now example number 4 is again the similar example. Exactly similar example है, but यहाँ पे decimal में है. तो कैसे करना है, let me explain once again with this example also, ताकि ये पैटर्न आपका परफेक्ट हो जाएगा. इसमें फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं. 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 up to n terms. Now you can take 7 as common. 7 आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, 0.1 0.11 0.111 up to n terms. Now 0.111 111 ये जब भी आता है आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. फिक्स है, ऑलवेज इस पैटर्न में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपॉन 9 देन मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. ओके. ये भी हो चुका है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 0.9 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे उसको, लेट्स राइट दिस डाउन. 1 minus 0.1 then 1 minus 0.01 then 1 minus 0.001 and so on up to n terms. Up to n terms. Now we can split this into two parts, 7 by 9. Now first portion सबका आप select कर लें. First portion में क्या है, 1 1 1. तो 1 कितनी बार आ जाएगा, n number of times. 1 plus 1 plus 1. So this will come n times. Second portion में क्या लिखेंगे, 0.1 to the power of 1. Then plus, you can take minus as common. माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं तो बाहर माइनस लगा देंगे और you can write down in curly bracket. Yes.
तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, 0.1 का पावर 1, देन 0.1 का पावर 2, 0.21 का पावर 3 and so on up to n terms. Now you can again simplify this and get the result. So 1 plus 1 up to n terms, it will become n. Then the second portion is simply the GP. तो उसका आपको GP की तरह सॉल्व करना है. तो first term is 0.1, then r to the power of n minus 1. So 0.1 to the power of n minus 1 upon r minus. Okay, now in this case यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना पड़ेगा, since r is less than, r is less than 1, तो आपको उल्टा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 minus r to the power of n upon 1 minus r. Now this formula is applicable. Now you can simplify and get your answer. अभी आपका आंसर इजीली आ जाएगा. सो मान्य इज आस्किंग 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज अगर आपको आगे तक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है देन इट इज रिक्वायर्ड, तो वो हमेशा जरूरी रहेगा. ओके, so now you can take the LCM and further simplify to reach the final result. तो फाइनल रिजल्ट तक अब आप आराम से पहुंच जाए. ओके, ऑलराइट एवरीवन. Now the next one, fifth one. Now question number 5. This pattern is always should be done with option method. ऐसे क्वेश्चन को आप ऑलवेज किससे करेंगे, ऑप्शन मेथड से. 0.2175 एंड बार इज ऑन 75. इसका क्या मतलब होता है, जब भी जिस नंबर पे बार होता है वो नंबर कंटिन्यूसली क्या होंगे, बार बार आएंगे, रिपीट. ठीक है, जिस पे बार है वो नंबर बार बार आए. अंडरस्टूड. सो 2175 75 75 एंड सो ऑन. तो जिस नंबर पे बार है वो नंबर बार बार आए. अब इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो जीपी का पूरा मेथड लगा करके टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें एग्जाम में. तो एग्जाम में आपको सीधा क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखा है उसको डिवाइड करो, कैलकुलेटर में आपको दिख जाएगा किस में यह आंसर आ रहा है, सिर्फ उसी को आपको सेलेक्ट करना है, बाकी सबको आप रिजेक्ट कर दें. ओके, सो जैसे जो इसका आंसर है दैट इज 359 अपॉन 1650. तो इसको आप डिवाइड करके चेक करेंगे ऑन कैलकुलेटर, यू विल गेट दिस. तो जैसे आपके पास ये आ रहा है दैट मीन्स द ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, अंडरस्टूड. शिव गुप्ता सिंह, आपके पढ़ाने से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सारे फॉर्मुलेस क्लियर हो जाते हैं. दैट्स ग्रेट, परफेक्ट. ओके, सो नाउ दिस वी हैव डन. Let's move on example number 6. Yes, find three numbers in GP whose sum is 19 and product is 216. तो थ्री नंबर्स आपको ऐसे पता लगाने हैं जिसका सम गिवन है एंड जिसका प्रोडक्ट गिवन है. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी देयर आर टू मेथड्स, और फिर हम देखेंगे उनमें से बेस्ट कौन सा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जब भी आपको थ्री नंबर्स अज्यूम करने हैं जीपी में, तो कौन से नंबर अज्यूम करेंगे. तो एक ही तरीका है, अगर एक नंबर ए है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, ए इंटू आर, और पिछला नंबर क्या होगा, ए अपॉन आर. सिंपल वे है, ए नेक्स्ट नंबर इज ए आर, प्रीवियस नंबर इज ए बाय आर. तो थ्री नंबर्स आपने ये अज्यूम किए हैं.
नाउ इन तीनों का सम गिवन है, तीनों का प्रोडक्ट गिवन है. सम इज 19 and product is 260. तो जब भी आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे a बाय आर इंटू ए इंटू ए आर विल गेट कैंसिल्ड. आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो a क्यूब इज 216. तो 216 किसका क्यूब होता है? इट इज द क्यूब ऑफ 6. तो a क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब. Therefore, value of a is equal to 6. तो a का वैल्यू कितना आ चुका है आपके पास? 6. Now you can apply the formula for sum. Sum का formula, तो a upon r, so it will become 6 upon r plus 6 plus 6 into r is equal to 19. So sum of these three numbers is 19. Now take the LCM and simplify. So 6 plus 6r plus 6r square is equal to 19r. So 6r square then minus 13r plus 6 is equal to 0. Now let's split them and solve. So 6 into 6 is 36. 36 को आपको split करना है, तो कैसे split करेंगे? 4 into 9 is 36. So 4r, 9r plus 6. So what is common? 2r is common. So 3r minus 2. Then minus 3 is common. So again we are getting 3r minus 2. Now compare this with 0. So you will get r is equal to 3 by 2. And from here you will get r is equal to 2 by 3. Okay. 3 by 2 और 2 by 3. So r आपके पास आ चुका है. Now what is the final requirement? You have to find out the three numbers. तीनों numbers आपको calculate करने हैं. So the first number is a upon r. So 6 upon 3 by 2. It will become how much? 4. Then next term is a, that is 6. And third term will be ar. So 6 into 3 by 2, that is 12. Sorry, this is 9. So 4, 6 and 9, these are the three numbers. ये वो तीनों number है. So your answer can be 4, 6, 9 or it can be 9, 6, 4. Both are correct. दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. दोनों ही क्या करेंगे? सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे. So these are correct. All right. So this was example number 6. Example number 6 सिंपल था, लेकिन लेंथी सॉल्यूशन है यहाँ पे. जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, इट इज क्वाइट लेंथी. तो उसका दूसरा मेथड क्या है? सेकेंड मेथड इसका शॉर्टकट मेथड है, दैट इज यूजिंग ऑप्शंस. यूजिंग ऑप्शंस. तो ऑप्शन से आपको चेक करना है. ऑप्शन में आप वन बाय वन चेक क्या करेंगे? फर्स्टली आप चेक करेंगे सम. जो तीनों नंबर्स आपको दे रखे हैं, तीनों नंबर्स को आपको ऐड करके देखना है, क्या उसका टोटल 19 आता है? इफ यस, देन चेक द सेकंड कंडीशन. क्या उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 216 आता है? तो जिन ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट कैन बिकम योर आंसर. वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. ऑलराइट. तो इस मेथड से आप विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. So Renuka is saying my fear about maths has reduced because of your amazing teaching. Thank you so much, sir. Okay, that's great. Thank you so much. So examples हमारे सारे हो चुके हैं.
अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 6B। चलिए 6B में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे फॉर्मूलेज, उन फॉर्मूलेज में से ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज आपको कैलकुलेट करना है। लेट्स कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो अब आपको बताना है द सेवेंथ टर्म। So which formula will be applicable? You have to apply the formula. कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है? द फॉर्मूला फॉर टी एन। तो टी एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर ले एंड यू विल गेट योर आंसर। तो टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट योर रिजल्ट। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आ चुका है आंसर गिवन बाय अनुज एंड तांबेश्वरी। दैट्स ग्रेट। So let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing. Okay.
तो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट हमने किया था अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का आंसर आप लोगों ने दे दिया था ऑप्शन नंबर 8। दैट्स ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम कम रहता है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते। लेट्स टेक सम रैंडम क्वेश्चंस ताकि ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर अप हो जाए। सो एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभी सॉल्व करके बताना है एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। टर्म नंबर 12, टर्म नंबर 12 आपको कैलकुलेट करना है। So it is minus 128, 64, minus 32 and so on. तो सीरीज में पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज 64 अपॉन negative 128. That is minus half. And what is first term? Minus 128 is the first term. Okay. So now what you have to do? You have to find out T12. A into r to the power of 12 minus 1. So minus 128 multiplied by minus 1 by 2 to the power of 11. Now you can simplify and get the answer. तो चलिए बता दें क्या आंसर आ रहा है। So Manish has given option number C 1 by 16. Anjali has also given 16. Okay, that's great. Rameshwari has also given C option. Yes, option number C is the correct answer. 1 upon 16. Perfect. Great. Then let's try which one? Question number 6. Okay, this time you have to answer question number 6. 6 का चलिए फटाफट बता दीजिए आंसर क्या होगा। The last term of the series up to 7 terms. That means you have to find out the 7th term. सीरीज का 7th टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो T7, A is simply 1, R is minus 3 to the power of n minus 1, so 7 minus 1. So what is the answer? Anybody? For question number 6. So minus 3 to the power of 6. It will become 729. Yes, Kumkum has given, Sana, Anuj, Manya, everyone has given correct. That is 729. Option number B is the perfect answer. Great. Good going, guys. Very good. चलिए 7th क्वेश्चन का आंसर बता दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x square, x, 1 and so on up to 31 terms. So you have to find out the last term, that is T31. T31 आपको चाहिए. So what is the first term? X square. Then what is R? Common ratio. Common ratio is 1 by x. And to the power of n minus 1. So 31 minus 1 gives 30. Now you can simplify and get the answer. So 1 upon x to the power of 28. So option number C. Anuj has given Kumkum Shubham. Yes, the option is absolutely correct. Then let's try the next question for sum. Question number 8. So this time you have to try question number 8 and give the answer. The sum of the series up to 7 terms. 7 terms तक का आपको sum बताना है। क्या रिजल्ट आने वाला है? तो सीरीज इज -2, 6, -18 and so on up to 7 terms.
So this time you have to find out the sum. Now sum में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? So for that you have to calculate r. r कितना है? 6 upon minus 2, that is -3. So if r is less than 1, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a into 1 minus r to the power of n upon 1 minus r. So this will be the formula. So what is a? a is -2, then 1 minus r कितना है? -3 to the power of 7 upon 1 minus r, that is -3. Now simplify this and get the answer. So Anjali and Divya has given the answer, option number A, that is -1094. Yes, -1094 is the perfect answer. Okay. So question number 8 is also done. Now let's try question number 10. तो 10 एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जिसमें काफी बार डाउट्स पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेंगे. Then Nishi is asking, test is updated on application for AP. Yes, test is the mixture of AP and GP, दोनों का mixture है, तो that will be uploaded tonight. तो इसलिए वो पहले अपलोड नहीं किया गया बिकॉज तो उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा उसमें और फिर सॉल्व करना है. तो जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो अभी डाउनलोड करके रख ले एंड उस पर उनको टेस्ट का लिंक आ जाएगा. यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ऑफ एपी एज वेल एज जीपी. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. 1/√3 plus 1, then 3/√3 and so on up to 18 terms. So this time you have to find out the sum up to 18 terms. Okay. तो कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो इज 1 divided by 1 upon √3. So it becomes √3. √3 है आपका कॉमन रेशियो. तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. अच्छा, √3 कितना होता है? 1.73. तो ऑफकोर्स इट इज ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन 1 है r, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. सो a into r to the power of n minus 1 upon r minus 1. तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. a multiply by r to the power of n minus 1 upon r minus 1. Now what you have to do next? अभी आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यूज आती है. तो जब भी आप लोगों ने बचपन में ऐसा 9-10 में देखा था तो इसको हम ऑलवेज क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं. जब भी ये सिचुएशन आती है व्हाट वी हैव टू डू? रेशनलाइज. रेशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? √3 plus 1 एंड डिवाइड भी करेंगे √3 plus 1 से. ओके. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 अपॉन √3. नाउ √3 का पावर 18 मतलब 3 की पावर 9. तो 3 की पावर 9 को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. -1. ओके. देन मल्टीप्लाई बाय √3 plus 1 अपॉन में क्या रहेगा? √3 -1 √3 plus 1 a plus b a minus b. तो a square minus b square का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया. Now you can simplify and get the answer. Avni has given the answer option number A. Anuj is also given A. Yes. So final answer आपका जो आने वाला है that is 9841 into 1 plus
√3 divided by 3. So this is your final answer. Option number A. Okay. तो क्वेश्चन कई बार दिखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट इट इज नॉट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स. सो यू डोंट हैव टू फियर फ्रॉम रूट्स और अल्फाबेट्स बिकॉज ये तो एक पैटर्न का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होता है, उसी स्टेप से आप सॉल्व करें, हमेशा आपका आंसर आराम से आएगा. ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर. चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करना है यूजिंग ऑप्शन, लेट अस अंडरस्टैंड. सो क्वेश्चन नंबर 11 says the second term of GP is 24 and fifth term is 81. Then find out the series. Now clearly इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शन तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर लोगे. सेकंड प्लेस पे होना चाहिए 24, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है, एंड डी का तो पता नहीं. तो वो सी ऑप्शन को आपको वेरीफाई करना है विद सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है? फिफ्थ टर्म शुड बी 81. तो क्या फिफ्थ टर्म 81 आती है या नहीं? तो यू कैन कैलकुलेट द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कितना है? 24/16. 24/16 is how much? 3/2. सो फोर्थ टर्म अवेलेबल है. फिफ्थ टर्म के लिए आप क्या कर लेंगे? फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो. यस, दिस इज 81. So therefore option number C is the correct answer. Okay, so C is absolutely fine. Then comes the 12th one. The sum of three numbers of GP is 39 and their product is 729. Then the numbers are. तो numbers क्या होंगे? So sum of three numbers, add all the three numbers and see whether it is satisfying or not. तो 39 तो सम आ रहा है एंड प्रोडक्ट भी आ रहा है 729. तो दिस इज satisfied, but which one is making the GP? GP किस में बन रहा है? First is not a GP because 3 is increase and decrease हो रही है. B is also not a GP because decrease होने के बाद increase हो रही है. And C is the GP because there is a common ratio. A and B option में there is no common ratio, but in option number C there is a common ratio of 3. So therefore C is the correct answer. All right. Then 13th one, question number 13. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या करना है? In a GP, the product of first three terms is 27/8. Then find out the middle term. तो जब भी थ्री टर्म्स की बात आती है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? नंबर इज A, AR and A/R. So these are the three terms. And the product of all these three terms, तो अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं then the product is 27/8. R will get cancelled. So A cube is equal to 3/2 cube. Therefore A का वैल्यू कितना आ चुका है? 3/2. एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा है? द मिडिल टर्म. द मिडिल टर्म इज नथिंग बट A. So therefore your correct answer is 3/2. Yes, option number A is correct. All right guys. Okay, so question number 13 is done. 14, yes, 14 is a good question. 14 को भी हम एक बार कर लेते हैं. Then 15, 16 ये पैटर्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो चलिए 14 पे पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बताना चाह रहा है? इफ यू सेव 1 पैसा टुडे
2 paisa the next day, 4 paisa the succeeding day, and so on. Then your savings in 2 weeks. So 2 weeks में आपका सेविंग्स कितना हो जाएगा ये आपको बताना है. तो डेली आप क्या कर रहे हैं, कुछ सेविंग्स कर रहे हैं एंड सेविंग्स के बाद आपको अपना रिजल्ट बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1, then 2, then 4, and so on. So in 2 weeks, that is in 14 days, number of days will be 14. आपको क्या निकालना है, 14 टर्म या फिर सम. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये आपको क्लियर हो जाएगा. यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सेविंग्स. टोटल सेविंग्स मींस आपको सम कैलकुलेट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द सम. ओके, चलिए सम निकालना है. सो व्हाट इज आर हियर? आर इज 2, first term is 1. So accordingly, we can apply the formula. So S14 is equal to A into R to the power of 14 minus 1 upon R minus 1. Now apply this formula and get the result. So which is the correct answer? Anyone? फॉर क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है. Come on everyone, you can find out the power of 2, 2 to the power of 14 minus 1, and that will be your answer in terms of paisa. So how much you are getting? 16383, and the unit is paisa. But options are given in rupees. अगर आपको rupees में दे रखा है, then divide by 100. It will get converted into rupees. So rupees 163.83 will be your answer. So we have converted paisa into rupees. Okay. So C is your final answer. Now the next one, question number 17. Now 17 में क्या करना है? The sum of first 20 terms of GP is 244 times the sum of first 10 terms. Then find out the common ratio. It's very simple. Question actually simple है, not at all difficult. But करना कैसे है? Let us understand. Sum of first 20 terms, S20, is equal to 244 times. So 244 multiplied by S10. Multiply by S10. Now you can apply the formula of sum. So A into R to the power of 20 minus 1 upon R minus 1 is equal to 244 into R to the power of 10 minus 1 upon R to the power of R minus 1. So you have applied the formula on both the sides. दोनों तरफ हमने formula apply कर लिया है. A and R are not available. Only the thing available is N. तो दोनों places पे N available था, उसको हमने put कर दिया है, substitute कर दिया है. Now let's cancel and solve. So what is getting cancelled? A will get cancelled. R minus 1 will also get cancelled. Now R to the power of 20 minus 1, इसको आप split कर सकते हैं. कैसे split करेंगे? R to the power of 10 plus 1, R to the power of 10 minus 1. A plus B and A minus B. It becomes A square minus B square. So accordingly, we have converted this. And on the other hand, we are having R to the power of 10 minus 1. So again, you can cancel this thing, R to the power of 10 minus 1. So what is left? R to the power of 10 will be equal to 243.
So 243 means 3 to the power of 5, or you can say root 3 to the power of 10. Now power is same. दोनों जगह क्या है? Power same है. So base will be equal. Therefore, value of R is root 3. R का वैल्यू कितना आ चुका है? Root of 3. All right. So option number C is your answer. Now you have to see whether A will be correct or C will be correct. So you have to see whether A is correct or C is correct. Because if you put minus root 3 to the power of 10 or root 3 to the power of 10, it is one and the same thing. So the result can be positive as well as negative. It can be anything. The common ratio can be anything. It can be positive or it can be negative. All right. So this was your question number 70. Then let's try question number 20. 20, which one? 21. Infinite series. Sum of infinite series. Question number 21. क्या formula है? Let us understand and apply. The question is 14 minus 2, then 2 by 7, minus 2 by 49, and so on. So here, the first term is 14, and what is R? R will be minus 2 by 14, that is minus 1 by 7. So A and R both are available now. Now the next thing is you have to apply the formula. S infinite is equal to A upon 1 minus R. So 14 upon 1 minus 1 by 7. So what you are getting? Let me know the answer. Yes, come on everybody. Which is the perfect answer now? 14 upon 1 plus 1 by 7. So what is the final answer? Yes, Anuj, Kritika, Avni, everybody is saying option number B. So you can simplify this. 14 upon 8 by 7. Now you can divide this. So 14 into 7 is how much? 98, and 98 upon 8. 98 upon 8 you have to solve, and your correct answer is 12, 1 by 4. 12, 1 by 4. Then let's try 24th also. 4 geometric means between 4 and 972. So you have to insert 4 numbers, 4 geometric means. Now you have to try. कैसे आप इसको ट्राई करेंगे? क्या मेथड आपका रहेगा? फटाफट से चेक करके बता दें कौन सा ऑप्शन सही है. See, there is one thing that ratio should be common.
तो ऑप्शन में आप सीधा जज कर सकते हैं किस में रेशियो कॉमन है। इन ऑप्शन नंबर सी ए यू कैन सी दैट इट इज 3, कॉमन रेशियो इज 3, whereas in option number B there is no common ratio, option number C में भी there is no common ratio, that means option number A के सही होने के चांसेस ज्यादा है। now you can connect with 4 and 972, तो 4, 12, 36, 108, 324 and 972, तो बाकी सारी प्लेसेस पे आपने चेक कर रखा है देयर इज अ कॉमन रेशियो ऑफ 3। नाउ 4 and 12 दिस इज आल्सो 3 and 324 and 972 here also the common ratio is 3, so therefore option number A is the perfect answer। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए बिना ही आप ऑप्शन मेथड से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, राइट। इसका डिटेल मेथड हमने ऊपर एग्जांपल में किया था, बट यहां पर आपने ऑप्शन से ही जज कर लिया विच वन विल बी करेक्ट। ओके, तो एग्जाम में क्योंकि टाइम कम अवेलेबल रहता है तो ऑलवेज आपको जितना जल्दी हो सके उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। देन राजेंद्र इज आस्किंग इनफाइनाइट सीरीज में आर अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो फॉर्मूला क्या रहेगा। सी, इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सम तभी निकल सकता है जब आर का वैल्यू लेस देन 1, तभी आप सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज सम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट विल बी सिंपली इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ चुका है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट 3000 पर मंथ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझें, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं है बट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3000 पर मंथ, ये उसकी मंथली सैलरी हो। he would get an increment of ₹100 per year, ₹100 का उसका क्या मिल रहा है, इंक्रीमेंट। तो अगर फर्स्ट ईयर में सैलरी 3000 है तो सेकेंड ईयर में 3100, थर्ड ईयर में 3200 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट विच रिसीव्स इन 25 years, तो 25 years में टोटल कितना अमाउंट उस पर्सन को मिला होगा, एंड मंथली सैलरी उसकी क्या रही होगी उसके लास्ट ईयर में, दैट इज लास्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सी, अभी आपको सब कुछ कैसे दे रखा है, मंथली दे रखा है, तो फर्स्ट ईयर में मंथली सैलरी 3000 है, सेकेंड ईयर में 3100, 3200 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास कितने हैं, 25 years। अब इसको यहाँ पे आपको देख के बताना है क्या यहाँ पे जीपी अप्लाई हो रहा है या नहीं, वेदर इट इज अ जीपी और नॉट। सो क्लियरली इट इज एन एपी, यहाँ जीपी नहीं है बिकॉज देर इज नो कॉमन रेशियो बट देर इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, ₹100 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप टर्म नंबर 25 कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, a plus n-1 into d, so 3000 plus 25 minus 1 into 100, so what will be the result, 5400 will be the salary in 25th year। तो 25वें साल में लास्ट ईयर में जो सैलरी रहेगी दैट विल 5400। तो यह आंसर तो आपके पास आ चुका है, बट अभी आपको क्या चाहिए, सम चाहिए कि टोटल 25 इयर्स में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला होगा, फर्स्ट ईयर में 3000 मंथली है, मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 3100 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 3200 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 कैन बी टेकन एज कॉमन, एंड ऐसे करते करते लास्ट ईयर में कितना मिलेगा, 5400। तो सम का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, सम ऑफ सीरीज इन एन एपी। तो 3000 से लेके 5400 तक ये क्या बन चुका है आपका एपी, 12 बाहर कॉमन पड़ा है।
तो एपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 12 इंटू n/2 इंटू ए प्लस एल, 3000 प्लस 5400, तो 6 इंटू 25 इंटू 8400, हाउ मच यू आर गेटिंग? 12,60,000। तो उस पर्सन को ड्यूरिंग 25 ईयर्स कितना मिला है? 12,60,000 रुपीज। दिस इज द आंसर। सो इन दिस वे आप उसको क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑलराइट, तो अनुज इज सेइंग थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए, इसलिए सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट, नाइस। चलिए एक और एग्जांपल हमारे पास है। अ पर्सन बोरोज रुपीज 8,000 at 2.76% of simple interest per annum. The principal and interest are to be paid in 10 monthly installments. तो 10 monthly installments के अंदर क्या करना है? इसका पेमेंट होगा। If each installment is double the preceding one, हर बार इंस्टॉलमेंट पहले से डबल है, then find out the value of first and last installment. तो फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? तो चलिए क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में लिया गया है एक लोन, देयर इज अ लोन ऑफ रुपीज 8,000 एंड ऑन दैट लोन वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। कितना इंटरेस्ट पे करना है? 8,000 का 2.76%, but not for 1 year, only for 12 months. So you can write 10/12. So how much will be the interest? Interest is rupees 184। 184 का यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट है। तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है, टोटल अमाउंट पेबल, वो कितना रहेगा? 8,184। दिस इज द टोटल अमाउंट पेबल। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आपको ये टोटल अमाउंट पे करना है इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। दिस अमाउंट इज पेबल इन 10 installments and this installments will form a GP। इंस्टॉलमेंट क्या फॉर्म करेगा? जीपी फॉर्म करेगा। और जीपी में क्या दे रखा है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? इट इज डबल द प्रीसीडिंग वन, पहले से डबल पे करना है। दैट मींस देयर इज अ कॉमन रेशियो ऑफ 2, तो R इज 2। फर्स्ट टर्म इज नॉट अवेलेबल, ये आपको कैलकुलेट करना है। टेन्योर इज अवेलेबल, दैट इज 10। टेन्योर आपके पास अवेलेबल है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर ऑफ n-1। ये आपके पास फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? यू डोंट हैव ए, आपके पास ए अवेलेबल नहीं है, तो हम ए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम। तो चलिए सम वाला फॉर्मूला चेक करते हैं। Sn is equal to a into r to the power of n-1 upon r-1। तो sum is available 8184, then 2 to the power of 10 minus 1 upon 2 minus 1। Okay, so let's simplify this। तो a का वैल्यू आ जाएगा 8184 divided by 1023, it will be 8। So a is available now। अभी आप tn का फॉर्मूला अप्लाई करें, 8 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1। सो नाउ यू कैन गेट योर आंसर। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखिए, हमने जो फॉर्मूला लिखा है
that will be different. So Tn is equal to 8 into 2 to the power of 10 minus 1. So 4096. 4096 is your value. ये आपका रिजल्ट आ चुका है. तो ये आपका कौन सा टर्म है, कौन सा इंस्टॉलमेंट है? 10th नंबर इंस्टॉलमेंट. एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 8 रुपीज का. तो फर्स्ट आपने 8 पे किया, देन उसका डबल 16, देन डबल 32, 64 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म आ गया आपका 4096. तो दिस इज योर जीपी. ओके. So illustration number 2 is also done. Now exercise number 6C. इसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं. Question number 1. 3 numbers are in AP and their sum is 21. So condition क्या है? First condition is series is an AP. उनका sum 21 है. Then अगर हमने सीरीज में ऐड किया है किसको? 1, 5, 15 को, then it becomes a GP. तो वो GP बन जाता है. 1, 5, 15 अगर आपने ऐड किया सीरीज में, इट विल फॉर्म एन जीपी. चलिए कंडीशन को चेक कर लेते हैं. 5, 7, 9 क्या ये सीरीज एपी है? यस. देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2. सम 21 आता है क्या? यस, सम इज आल्सो 21. सो both the conditions are satisfied. Now check the third condition. If we add 1, 5 and 15, it will become 6, 12, 24. Now is this a GP? क्या ये GP फॉर्म कर रहा है? Yes, there is a common ratio of 2. Common ratio of 2. Therefore, option number A is correct answer. 579 is your correct answer. All right. Okay. Now the second one. Second, I think आप इजिली कर सकते हैं. 1/3, 1/3 square. There is a common ratio और common ratio के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे. थर्ड वन इनफाइनाइट सीरीज है. ये मैं एक बार करवा देता हूं आपको. इनफाइनाइट सीरीज. So question number 3, 1, 2/3, then 4/9, and so on. Then you have to find out the sum of this infinite series. So A upon 1 minus R. What is A? A is 1. Common ratio. Common ratio is 2/3 upon 1. That is 2/3. So let's simplify and get the answer. तो सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा आपका रिजल्ट? You are getting 3. So sum up to infinite terms is equal to 3. Option number B. So for question number 3rd, you are getting your answer as B. So Kritika, Anuj, Manya, everyone has given the correct answer. That's perfect. Then question number 4. The sum of first two terms of a GP is 5/3 and the sum up to infinite series is 3. Then find out the common ratio. Common ratio calculate करना है. तो कैसे calculate करेंगे? Let me know. फटाफट से बता दो. कॉमन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में. तो सम ऑफ टू टर्म्स S2 ये गिवन है आपको 5/3 एंड S infinity is 3.
ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S2 के लिए? A into 1 minus R to the power of N upon 1 minus R. Okay. Then S infinity का है 3 is equal to A upon 1 minus R. तो A upon 1 minus R का वैल्यू कितना है? 3. And the same thing is available here, A upon 1 minus R. तो इस पूरे की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3. So A upon 1 minus R can be written as 3. So let's write this. 5 by 3 is equal to 3 into 1 minus R to the power of n. Now you can simplify and get the result. तो अभी आप सिंप्लीफाई करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो 5 upon 9 is equal to 1 minus R to the power of n. So R to the power of n is equal to 1 minus 5 by 9. That means 4 by 9. Okay. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें. n is basically 2. So R square is equal to 2 by 3 square. So when power is same, base is equal. Therefore R का वैल्यू आ चुका है 2 by 3. तो n 2 क्यों है? Because it is sum of two terms. Therefore n is equal to 2 and R will be 2 by 3. So 2 by 3 is your correct answer. So this was question number 4. The fourth is also completed. Now let's try question number 5 also. PQR are in AP and XYZ are in GP. Then the given series is equal to. तो जब भी ऐसा गिवन हो कि अल्फाबेट्स गिवन हैं और वो एपी एंड जीपी में है, इट इज ऑलवेज बेटर टू अज्यूम सम नंबर्स. कुछ भी आप नंबर अज्यूम कर सकते हैं, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम. सो क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू आर, ये तीनों नंबर एपी में है. तो कोई आसान सी सीरीज हम ले लेते हैं जो एपी में हो. 2 and 3. ये हो गया आपका P, Q and R for an AP. Then next is GP, X, Y, Z. तो X, Y, Z. तो GP का कोई सिंपल सीरीज ले लें. 1, 2 का 4, राइट. 1, 2 and 4. ये आपका सीरीज हो गया कौन सा? GP. नाउ अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लो, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. So X to the power of Q minus R, Y to the power of R minus P, Z to the power of P minus Q. तो चलिए वैल्यू पुट कर दें. 1 to the power of 2 minus 3, then 2 to the power of 3 minus 1, then 4 to the power of 1 minus 2. Now let's simplify and get the answer. So 1 to the power of minus 1 is 1, 2 to the power of 2 is 4, and 4 to the power of minus 1 is 1 by 4. So what is the final answer? You are getting 1. So 1 is your final answer. Okay. So question number 5 is completed now.
Then let's try which one. Question number 9 you can try. Yes. Question 9 आपको try करके बताना है what will be the answer. Till then, let's make some space here. थोड़ा सा space बना लेते हैं. Question number 9 आपको solve करना है. If the terms 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then find out the value of x. ये पैटर्न हमने ऑलरेडी कर रखा है. चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं यहाँ पे. 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP. So जब भी कोई सीरीज AP में है, there will be a common difference. So T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. So there is a common difference. तो इसको सॉल्व करते हैं. X plus 10 minus 2x is equal to 3x plus 2 minus x plus 10. Okay, so let's simplify. 10 minus x is equal to 2x minus 8. So therefore 3x is equal to 18. तो x का वैल्यू आ चुका है कितना? 6. So this is your value of x. So Kumkum has given the answer. Manya, Avni, Nityashri, Anuj, Renuka, Kritika, great. So everyone has given option number C, that is 6. Then, if A is the arithmetic mean, question number 10 पे आ जाते हैं. If A is arithmetic mean of two positive unequal quantities and G is the geometric mean, then which of the following option is correct? Now, question में simply क्या किया है? Comparison किया है किसका? Arithmetic mean and geometric mean का. वैसे ये कंपैरिजन आपका डिटेल में आएगा इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर. वहां पर हम इसको ऑफकोर्स डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए भी एक बार समझ लेते हैं दोनों नंबर्स कैसे हैं. अनइक्वल है. ओके, पॉजिटिव है एंड उसका एम एंड जीएम आपको कंपेयर करना है. तो यू कैन टेक एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप सेलेक्ट कर लें. उसका एम जीएम जब आप निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. एम आपका ऑलवेज ज्यादा ही आने वाला है. लेट्स टेक सम एग्जांपल. लेट्स से वन वैल्यू इज 16, कोई सिंपल वैल्यू है 16 एंड 9. ओके, if you find out arithmetic mean 16 plus 9 upon 2, you will get 12.5. Then अगर आप geometric mean calculate करते हैं, it is root of 16 into 9. 144 का root, that is 12. So arithmetic mean is 12.5, geometric mean is 12. So arithmetic mean will be greater than geometric mean because the values are unequal. अगर values equal होती तो if values are equal, then AM and GM will also be equal. Let's say 10 and 10. If both the values are 10, then arithmetic mean will also be 10, geometric mean will also be 10. So in that case, these two will become equal. But whenever the values are different and positive, AM will be greater than geometric mean. So which one is correct? Option number B is perfect. Then the next one.
let's try this time 11. Arithmetic mean of two positive numbers is 40 and geometric mean is 24. The numbers are. Then you have to find out the numbers. So according to option, you can simplify and get the answer. तो दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें एंड यू विल गेट द आंसर. तो चलिए फटाफट ऑप्शन से ट्राई करते हैं. किस ऑप्शन से आपका मैच होता है दैट विल बी करेक्ट. तो 40 is arithmetic mean and 24 is a geometric mean. So 72 plus 8 upon 2 gives 40. So arithmetic mean is verified. Then geometric mean 72 into 8 and then square root. So what will be the result? It will be 24. (72) into 8 and then square root. It is 24. So therefore, option number A is correct. Option number A is correct. Then let's try question number 13 also. The sum of four numbers in GP is 60. Four numbers जो कि ऑप्शन में आपको दे रखे हैं और जीपी में होनी चाहिए उसका सम कितना है 60. तो लेट्स चेक दिस कंडीशन फर्स्ट. 4, 8, 16, 32 सारे नंबर्स जीपी में हैं एंड उनका सम कितना है 60. यस, यहाँ तक कंडीशन आपकी मैच हो चुकी है. दिस मच कंडीशन इज वेरीफाइड. Then arithmetic mean of first and last number is 18. So first number 4, last number 32. इसका arithmetic mean कितना है 18. So 4 plus 32 upon 2. Yes, you are getting 18. So this condition is also verified. So therefore option number A is correct. तो A option यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है. बिकॉज यहाँ पे सारी कंडीशंस क्या हो चुकी है मैच. देन क्वेश्चन नंबर 14. ये पैटर्न आप ऑलरेडी कर चुके हैं. देन लेट्स ट्राई द डिफरेंट वन. 23. 23. The sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13. The sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13. ये आपको कैलकुलेट करना है. So what will be the first number which is divisible by 13? So after 500 you can try this. So 500 upon 13. तो 500 upon 13 कितना आता है पहला आप ये चेक कर लें. Accordingly you will get the next number. So 500 upon 13, let's calculate. 500 divided by 13 is 38.4. That means 39th number will be greater than 500. So 39 into 13. 39 into 13 is 507. This is the first number of the series. तो ये series का क्या है first number. Then next number will be 520, then 533 and so on. And the last number of the series का last number कौन सा होगा? तो again try. 1000 upon 13 is how much? 1000 divided by 13 is 76.92. That means 76th number
will be less than 1000. So 76 into 13, 988. So this is the final series. तो ये आपका फाइनल सीरीज है और इस सीरीज में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है. So sum of all numbers which are divisible by 13 in this group. So from here, A is 507. Common difference is 520. The common difference is 13. And then you can calculate N also. N कैसे calculate होगा? 507 is the 39th number. And 988 is 76th number. So overall, how many numbers are there? How many terms are there? You can calculate this. So from 39 to 76. So there will be 39, then 40, then 41, up to 76 you have to count. So this will be 38. So N will be 38. Now Sn is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. So 38 upon 2, then 2 into 507 plus 38 minus 1 into D. Now simplify this and get the answer. जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ चुका होगा ऑन द स्क्रीन. सो कृतिका सिंह ऑप्शन नंबर ए. तो मेन स्टेप इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सीरीज फॉर्म कैसे करना है. तो सीरीज फॉर्मेशन हमने पहले देखा एंड आफ्टर द सीरीज फॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट द सम. ओके, डन एवरीवन. So we have covered everything from this chapter. AP and GP both are completed now. So your task is to practice all the questions from here. And in case of doubt, we will be discussing on the application. Okay. So I hope this chapter is clear right now. So let's meet again in the future session. So till then, bye everyone. Take care and see you soon.